ओके आ गए सब। इरफान तुम हो वहां पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इरफान, आर यू देयर? इरफान तुम हो वहां पे? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ तो मुझे ये बता दो, इरफान है वहां पे? हम्म, अरे सीधे पूछ रहा है, तुम में से कोई इरफान है? हाँ आ गया शायद। हाँ इरफान तुम आ गए? अरे कहाँ गया मेरा शेयर स्क्रीन? इरफान तुम हो इस वहां पे? यस सर, यस सर। तो स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे अटेंडेंस का। सो व्हाट वी वर डूइंग, इससे पहले जो हम क्या कर रहे थे, सो आई हैव टू रिपीट, पर क्या करें? I was talking about a pth power summable sequence. By that I mean, pth power summable sequence का मतलब, जिसको मैंने L small lp लिखा, it was all scalar sequences x1 x2 such that xi is a scalar and summation mod of xi raised power p is less than infinity. I was asking the question कि क्या ये linear space है? So linear space के लिए मतलब I should, if I add two things, it should be there and scalar multiplication should also be present. So I took my x plus y, which was of course x1 plus y1, pointwise addition, x2 plus y2, and of course I also know that x y belongs to LP, which would imply that summation xi raised by p is less than infinity. That summation yi raised by p is less than infinity. The question is, what about summation xi plus yi raised by p? Now, by Minkowski inequality, it implies that this whole thing raised power 1 by p is less than equal to summation xi raised to power p whole raised power 1 by p plus summation yi raised to power p whole raised power 1 by p. Now remember that this thing inside, जो है, it is finite because this is less than, this is also finite. And if I take the pth root of a finite thing, so this everything here is finite on the right hand side, which implies that summation xi plus yi raised to power p is less than finite raised to power p, which is of course finite. So of course this sum is also pth power summable. And so is the scalar multiplication. If I took alpha, वो तो ज़्यादा easy है, xi raised power p, so whole it would be actually alpha raised power p, because this is a constant, this has got nothing with the sum. And of course this would be finite because this is finite. Okay, of course mod of alpha. Okay, now what I'm trying to say, it's a vector space, it's a linear space for all p greater than equal to 1. Why? Because this Minkowski inequality is valid for p greater than equal to 1. So if I define the norm, and just to denote it is the pth power norm, I define norm of x for all x belonging to my pth power summable sequences. I define my norm to be summation, needless to say what it should be, I runs from 1 to infinity, whole raised power 1 by p.
which of course I now know because it's a pth power summable sequence. This is a finite thing and I'm taking the pth root. I'm raising it to the power 1 by p. And of course, p is greater than or equal to 1. So in this way, I have got an infinite collection of normal linear spaces, provided this defines a norm. अब norm define करने का क्या है? It's easy. पहली बात तो ये है कि xp is clearly positive. I'm taking the positive p to power. So मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको positive लिया था. ठीक है? And then I take xi mod raised power p. They're all positive numbers, so I take so it's a positive number, a positive real number. And then, of course, if norm of x is equal to 0, it would imply that summation xi raised to power p whole raised power 1 by p is equal to 0, which means if I raise to power p on both sides, it implies that summation xi p is equal to 0. Of course, we have got p is greater than 1, a positive number power, a positive, p is greater than 1, so it is the positive power of a non-negative number, और उसका sum 0 है, तो ये तभी possible है if x raised power p is equal to 0 for all I, which is the same as saying xi is equal to 0. जो हम करते आए हैं, we should imply that x must be a null sequence. No, sorry, a null sequence which is the 0 of this linear space. तो पहली प्रॉपर्टी और दूसरी तो खैर ऑब्वियस थी जो हमने अभी की. तीसरी तो है सीधा जो इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है. इट इज द सेम एज इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी अंडर नॉर्म वुड बी द सेम एज मिन्काउस्की इनइक्वालिटी, जो तुम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो लोअर क्लासेस में. So in this way, now LP for all p greater than or equal to 1, p to the power summable sequences are normed linear spaces. तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ मतलब जो एग्जांपल्स है हमारा नॉर्मल लीनियर स्पेसेस का, वो मतलब बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज गुड. वी मस्ट हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स. नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, इज LP कंप्लीट? अब हमारी टेक्निक बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसा, लेकिन ऑफ कोर्स नॉर्म डिफरेंट है, तो उसका हमें ध्यान रखना है. सो नॉर्म इज डिफरेंट, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. Is LP complete? And does every Cauchy sequence inside LP converge in LP? Again, LP is of course a collection of sequences, a vector space of sequences. So when I say a sequence inside LP, it has to be a sequence of sequences. Again, I would denote xn to be my xn1, xn2, so on and so forth. ये स्क्वायर नहीं है, ये मतलब ये इंडेक्सिंग है ना उसका. हम ये पहला टर्म है सीक्वेंस की, ये दूसरी टर्म है सीक्वेंस की, ये तीसरी टर्म है, and so on and so forth. So now again I can think of my first sequence as x11, x12, so on and so forth. Then I have another sequence x2, 2, x21, x22, so on. And I can go on and on. Another sequence would be x31, x32, so on and so forth. And then you just go on and on. So this is your Cauchy sequence. Again, what we will show that if this is a Cauchy sequence in LP, then this becomes a Cauchy sequence, no? This column sequence. Each of these columns is itself a sequence inside K, inside the underlying field, and therefore it must converge. So we would show that, say, it converges to some x1, x2, individually these columns converge. So then I show that the sequence formed by those, the limits of those columns would be inside LP, and xn would actually converge to x. Well, this sequence of sequences would converge to this particular sequence, which I obtained by taking the limits of each of these columns as scalar sequences. So let's go. मतलब इसको करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. So let's say let xn be a Cauchy sequence in LP. So it implies that for any epsilon positive, there exists
a natural number n naught such that norm of xn minus xm p, मतलब pth norm हम इसको कहते हैं क्योंकि इसका p के साथ कुछ कनेक्शन है. So this would be less than epsilon for all n m bigger than n naught. ठीक है? So let me join the applied आ गई. Okay. Okay, anyway. So applying the formula for my norm, what is the formula for norm? This should be xni minus xmi raised power p whole raised power 1 by p. Norm की जो definition है, पिछले पेज पे हमने norm को define किया था. As you can see, you take the components, put the mod around, take the p to power, then take the sum and raise the whole thing to the power 1 by p. So that's what I have done. Now this whole thing I runs from 1 to infinity is less than epsilon for all n m greater than n naught. Now raising both sides to the power p would imply, it would imply that summation I runs from 1 to n, 1 to infinity, x sub ni minus xm sub I is less than a whole raised power p is less than epsilon raised power p for all n m bigger than n naught. Now remember, you have got positive numbers. उनका sum जो है वो less than some number है. वो तभी possible है जब उनमें से हर कोई less than that number हो. It should automatically imply that xni minus xmi whole raised power p is less than epsilon raised power p for all n m greater than n naught and for all I bigger than or equal to 1, which would imply, of course, xni minus xmi is less than epsilon for all n m greater than or equal to n naught for all I greater than or equal to 1. Now this इसको अगर मैं नाम दूं अपनी equation star का, so this implies that for each fixed n, fixed I greater than or equal to 1, xni is a Cauchy sequence. It is the same thing, the column that I did the last time. बिल्कुल वही technique is a Cauchy sequence of scalars in K, and K is complete. If K is complete, therefore xni must converge to some xi as n approaches to infinity for all I. Of course, this belongs to K. So let मैं इन्हीं को जमा करूंगा, ये जो individual limits of the columns है, into a sequence. Okay. Now from star जो हमने equation की थी, कहाँ गया वो? पीछे जाते हैं. हाँ, ये जो star था. Now if I let, now this is true for all n m bigger than or equal to n naught. So I can take m very very big. I can let m approach infinity. So okay, from star letting m approach infinity, we get, हमें क्या मिलेगा? We will get xni minus xi is less than epsilon था शायद for all n m bigger than n naught and for all I greater than or equal to 1. So it would imply, या मैं इसको छोड़ के, मतलब कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, वरना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट टू मेक ए कैलकुलेशन लिटिल इजियर, नाउ x and I converge to this thing, right, for all I. So मैं एप्सिलॉन को थोड़ा अपने हिसाब से चूज करूंगा. It has to be any positive number. तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, so you have got x and I converges to xi, therefore मैं ऐसे लिखूंगा for any, मतलब ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन एप्सिलॉन का जो थोड़ा अजीब लगता है, वहां पे कुछ पावर वावर आ जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है.
for any epsilon positive, there and for all I bigger than equal to 1, there exists n naught belonging to the set of natural numbers such that, देखो मैं epsilon को थोड़ा suitably choose करूंगा, वरना वही था xn है यहाँ पे, xi is less than, let me write it as epsilon divided by 2 raised to power iota whole raised to power 1 by p. मतलब मैंने इस पॉजिटिव नंबर को थोड़ा एडजस्ट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो तुम काफी बड़े बच्चे हो गए हो, यू नो दैट. एंड फॉर ऑल I greater than equal to 1, ये तो पहले ही लिख चुका. Now it implies that, what does that mean? That means xni minus xi raised power p is less than epsilon by 2 raised power I for all n greater than equal to n naught, which implies that summation xni minus xi raised to power p is less than summation epsilon 1 by 2i. I runs from 1 to infinity. I runs from 1 to infinity for all n bigger than equal to n naught. अब ये जो है summation I runs from 1 to infinity 1 by 2i, this is equal to 1. This is a geometric series. So it would imply that, it would imply this. It would imply this summation, let me write it, xni minus xi raised to power p is less than, what was that, epsilon, I runs from 1 to infinity, for all n greater than n naught, which implies actually, this is p to power summable sequence, यानी xn minus x belongs to LP. एक चीज हमें ये पता चली, दूसरा ये भी पता चली कि it would also imply that norm of xn minus x raised to p to norm is less than epsilon for all n greater than n naught. That is, for any epsilon positive, there exists an n naught such that norm of xn minus x p is less than epsilon raised to power 1 by p. It doesn't matter, it's still a positive number, an arbitrary positive number. So which means that xn converges to x and xn minus x belongs to LP. अब फिर से वही बात है, it implies that x equal to xn minus xn minus x also belongs to LP. And of course, ये भी तो हम, and xn, it means xn converges to x which belongs to LP. So every Cauchy sequence converges inside LP, which implies LP is complete. Which implies LP is complete for all P, which implies, of course, LP is a Banach space. For all P greater than equal to 1. P for summable sequences की जो space है, it is a complete space. Now, how about हमने अभी check ही नहीं किया Rn का, right? लेकिन Rn पे बहुत सारे norm हैं. Rn पे एक norm हमने define किया था, हम इस पे मतलब जैसे x किया था, xp. क्या ये complete है? अगर मैं Rn पे define करता हूँ, means n tuples या Cn. अगर मैं उस पे p to power norm define करूंगा, ऐसे I runs from 1 to n, लेकिन यहाँ पे finite है. Of course वो summable है. यहाँ पे summability की तो कोई मतलब कुछ check ही नहीं करना, because it is a finite set of real numbers which would be finite. The question is, of course it also defines norm, but क्या ये complete? Does every Cauchy sequence of n tuples converge inside Rn Cn under this norm, or under the sup norm, which is a different norm? Supremum xi, I runs from, यहाँ पे तो I lies between 1 and n है. It's not finite set है. तो ये तुम चेक करोगे. You can use almost identical, मतलब ये it is easier, जो हमने अभी तक किया बिल्कुल वही करना है, लेकिन आसान है, क्योंकि तुम्हें summability प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं,
है ना, because everything is summable here because these are all finite sums. So they are, of course, they are Banach spaces under these norms. Okay. तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ. किसी को कुछ पूछना है? ये तुम एक होम असाइनमेंट ये भी कर सकते हो. इजी है, इसी को फॉलो करना है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे यूज करना है. जो हमने एक ही टेक्निक बेसिकली हमने यूज की. We took that sequence of sequences and took the columns, और फिर हमें दिखाया क्योंकि वो sequence of scalars है तो it must converge to some scalar, and then we collected those into a sequence and we showed that sequence belonged to the same space. हाँ, any questions? अरे जल्दी से. सर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमें इस यूनिट के सर नोट्स प्रोवाइड होने चाहिए. हाँ, लेकिन मैं देख रहा था नोट्स, लेकिन मैंने उसमें उतना ज्यादा, मतलब ये जो मैंने इसमें किया है ना लेक्चर्स में, मैंने काफी ज्यादा किया है उससे. मतलब वहां मैंने शायद इतनी एग्जांपल्स नहीं की होंगी. वहां मैंने ऐसे ही क्लास में तो बताया होगा कि ये एग्जांपल है. फिर अब नोट्स में होता है ना, नोट्स में शॉर्ट ही लिखते हैं, लेकिन मैं नोट्स भेज दूंगा. नोट्स से सर आइडिया मिलता है हमें कि क्या पढ़ना है, क्या हम पढ़ रहे हैं. हाँ, मैं चाहता था, लेकिन अगर तुम सभी वो सिमंस की किताब खरीद लो, वो ज्यादा नहीं होगी, 300-400 रुपए की होगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं. और या फिर वो गॉफमैन एंड पेड्रिक जो मैंने बोला था, तो उन दो में से शायद गॉफमैन एंड पेड्रिक नहीं मिलती उतनी आसानी से, लेकिन सिमंस मिल जाती है. तो उससे भी अगर तुम चाहो तो काफी कुछ सीख सकते हो. नोट्स में तुम्हें अभी आज ही भेज दूंगा. मैं ढूंढ रहा था कहाँ है उसकी सॉफ्ट कॉपी, लेकिन मुझे लगता है शायद मिल गई मुझे. और कुछ जल्दी से कुछ पूछ लो, कोई रेज हैंड कर लो, कुछ बोलो. अरे कितने हो तुम वहां पे? हाँ इरफान, तुम्हें कुछ पूछना है? नो सर, नो सर. अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं नोट्स भेज सर दूंगा. लिया मैंने. हाँ, नोट्स में भेज दूंगा, लेकिन तुम खुद भी थोड़ा बुक्स भी खोल लो, ठीक है ना? ओके सर. तो यस बुक्स सर. खोल लो, उससे पढ़ लो. और इसमें भी मैं थोड़ा काफी धीरे जा रहा हूँ. तुम्हें ऐसे पता चलेगा जो मेरे पास नोट्स है ना, अभी यस सर. तक मैंने सिर्फ एक पेज कवर किया, कल से अब तक. मतलब अभी जो मैं देख रहा हूँ ना नोट्स पे, ये मैंने शॉर्ट में एक पेज पे लिखा है. मतलब ना ये एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह जो भी, मतलब उतना यस ज्यादा सर. नहीं. तो एक पेज था ये, यानी मैं काफी स्लो जा रहा हूँ. लेकिन तुम अगर बुक्स पढ़ोगे तो इट्स बेटर. ठीक है, सो लेट्स, चलो इसको खत्म करते हैं. ओके. ओके सर, थैंक यू. तो ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़.